We expect Honorable Chief Minister to arrive any moment now. We have on the dais our dignitaries, distinguished icons, Honorable Ministers, we have on the dais and are honoured to welcome on the dais Mr. Jagdish Seth, Mr. Sudhir Mehta, Chairman Torrent Group, Honorable Minister Anandaben Patel, Minister for Revenue, Road and Building, Urban Development, Urban Housing, Mr. Hidehiro Yokko, President JETRO, Honorable Minister Ganpat Bhai Vasava, Mr. Craig Rogerson, President and CEO, Chantira Group USA, Honorable Minister Shri Nitin Bhai Patel, Chairman Adani Group, Mr. Gautam Bhai Adani, Her Excellency, Mrs. S. Bapu Gosk, Minister for Social Security, Mauritius, Honorable Minister of Citizenship, Immigration and Multiculturalism, Canada, Mr. Jason Kenney, and other dignitaries and distinguished icons. We welcome all of them on the dais. Honorable Chief Minister Shri Narendra Modi has arrived at the venue. Ladies and gentlemen, please welcome Honorable Chief Minister of Gujarat Shri Narendra Modi to this valedictory function of 6th Global Summit 2013. We welcome on the dais Honorable Chief Minister Shri Narendra Bhai Modi, Honorable Speaker Shri Vajibhai Wala, and all other distinguished icons and dignitaries on the dais. Honorable Chief Minister and other dignitaries are being welcomed with a khadi handkerchief which epitomizes the Gandhian philosophy. Summit.
distinguished delegates, in the Vibrant Gujarat 2011, some benchmarks had been achieved. We have tried to scale up this event under dynamic leadership of our Chief Minister to create new benchmarks. Last time, the total events which had been organized were 67. Friends, this time we have been able to organize 127 under the Vibrant Gujarat 2013 event. Our Chief Minister has been always emphasizing on give priority to major thematic events of innovation, knowledge, sustainability and youth empowerment. Distinguished delegates, last time we could organize 8 events in these 4 areas. But this time, we have been able to scale it up to 31 events. And the biggest event was the International Conference of Academic Institutions, in which more than 145 universities participated. Friends, anything which flows in during these events, it comes to the quality speakers, good speakers who share their knowledge and experience. Last time, we could muster about 251 renowned speakers to share their knowledge with us. This time, we have tried to scale it to, we could get about 830 speakers who share their wisdom with us. Friends, I think the Global Trade Show has been a benchmark, and see, we had 36,400. Ladies and gentlemen, this time we have clocked in more than 58,000 delegates. You must have seen the warmth of the people here to meet our Chief Minister and to do business here during the last 2 days. Most important key factor is that the foreign delegates in the event in 2011, we had significant distinguished presence of 1,400 foreign delegates. Ladies and gentlemen, this time we have so far clocked in more than 2,100 foreign delegates. And many of them are present in these late hours of today at 5 o'clock for the concluding session. Our Chief Minister has been always emphasizing on move on more for strategic partnerships in the theme areas like innovation, sustainability, skilling of people, youth empowerment, and knowledge sharing. In these areas, in the year 2011, we had 460 strategic partnerships. But I am very happy to tell you, the extent, the level to which it has gone, we have not asked anybody, it has come of their own. 2,670 strategic partnerships in the theme areas. Partnerships in the theme areas. People ask, what about the investment intentions? I'll be honest, ladies and gentlemen, our instruction of our Chief Minister had been that don't go for investment intentions. But it's the duty of the state, if somebody files an investment intention, to see that they are facilitated adequately and properly so that their intentions are satisfied. Therefore, we had a mechanism so that their intentions are satisfied. Therefore, we had a mechanism to register online everything that whoever files the investment intentions would take on board and see whether it is a rightful investment intention, then go and accept it or reject it or post it, keep it pending for further due diligence. After the due investment intention, the SME sector 4,417. But this time there has been enormous response and the figure has been 12,886. Friends, I must tell you, when people go back, we want to assure you on behalf of the government
that these 1,286 investment intentions which will be filed in the SME sector, minimum 80-85% of them will go into commercial production in next 2 years' time. When you come back for the Vibrant Gujarat 2015, I think you will see that how much benefit this SME sector has got. Lastly, the important thing is the employment generation by the small and medium enterprises. And it's a very important thing, and it is the catalyst for any development. Ladies and gentlemen, last time we had got a figure of 228,670 employment generation, and I must tell you, out of these MOUs what had been signed in the small scale sector, 78% of them have gone into production by this time. Friends, this time, this 3,73,000 will be the employment generated from the small and medium enterprises which have signed these understandings during this event. With this, I try to give before you some numbers which we will probably keep it as a benchmark for future events. Thank you, ladies and gentlemen, for your present hearing. Thank you very much. Thank you, Mr. Sahu. We now invite Mr. Motu Morimoto, Managing Director, Hitachi Home and Life Solutions India Limited, for his address. Namaste and Kamcho. Madanir Mukya Mantri Shri Narendra Modi ji, उपस्थित अतिथिगण, भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले श्री नरेंद्र मोदी जी को वाइब्रेंट गुजरात की सफलता के लिए हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। Honorable Chief Minister Shri Narendra Modi, dignitaries, ladies and gentlemen, congratulations to Shri Narendra Modi and government officials for making the Vibrant Gujarat 2013 a wonderful and successful event. As for our company, there was a fire incident on 18th July 2012 at our newly built Unit 2 at Kadi, which got completely destroyed. But within 5.5 months of record time, the factory has been reconstructed and now it is ready for operation. We received overwhelming support from Gujarat government at the time of fire and also during the revival plan of HHLI, our company. Without government support, it would have been impossible to reconstruct the factory in such a shortest time. This is the record time in India to make a factory. Tomorrow, the factory will be inaugurated by Shri Narendra Modi. We are thankful to Shri Narendra Modi and appreciate his excellent leadership and government support, and of course, we are thankful to Gujarati people. Thank you and God bless. Thank you, sir. We are honored to invite Mr. Pankaj Patel, Chairman Zydus Cadila, for his address.
Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Modi, distinguished guests, ladies and gentlemen. At the outset, I take great pleasure in congratulating the team of Bhai and the Chief Minister for organizing the Vibrant Gujarat event so successfully. Today we have witnessed a resounding success of the 6th edition of Vibrant Gujarat. It is very evident what benefit such sustained events and efforts gives us. It's a vibrant platform for convergence and which will result into progress and development of our state. I strongly believe that the consistent efforts put in every 2 years without fail over the last decade have created a plethora of opportunity for all the Gujaratis sitting here. This year, the event is very much bigger than before, with more global participation, covering much broader spectrum of dialogues and connecting people with diverse sphere of opportunities in business, higher education, science and technology. With the shift of attention from just investment to developing management statistics and forging global partnerships, we have laid a very strong foundation today for the next 10 glorious years for the state of Gujarat. Under the dynamic and visionary leadership of our Honorable Chief Minister Shri Modi, Gujarat has shown the way of a comprehensive development model with a futuristic and more inclusive development. It has reached out across the social, economics strata, across the agriculture, industrial, service sector successfully, connecting investors, businessmen, traders, academicians, researchers, farmers, planters, bureaucrats, politicians, and even our children. Last 2 days have brought in new learnings, and I'm sure this will play a very important role as we look to harvest more opportunities in our journey to take the Gujarat further on the path of economic growth and social progress. At this high note of optimism on conclusion of Vibrant Gujarat Global Summit 2013, I once again take pleasure in congratulating our Honorable Chief Minister Shri Modi and his team for successfully concluding the Vibrant Gujarat 2013, and also I am looking forward for a next summit for new horizon, new ideas and new views. Thank you very much. Jai Jai Garvi Gujarat. Thank you, sir. We are privileged to invite President and CEO, Chemtura Group, USA, Mr. Craig Rogerson for his address. Namaste. Honorable Chief Minister Modi, esteemed members of the dais, delegates, it's a privilege and honor to represent Chemtura at the Vibrant Gujarat Global Summit. Many of you may not know Chemtura. It's a specialty chemical company headquartered in Philadelphia with global operations and global businesses that are market leader businesses in markets ranging from transportation, electronics and energy, agriculture, and pharmaceutical intermediates. What really drives our business is innovation. And while we've been in India for a number of years in the agricultural chemicals area, this is our first entree into the state of Gujarat. And I will say, building on the foundation of Solaris Chemtech in Kavda, relative to their social responsibility, relative to their technology, offers us an opportunity to bring that innovation to Gujarat. And while I was here 2 months ago to announce the intent of forming that partnership with Solaris Chemtech, it's amazing to me that in 2 or 3 short months, the progress we've made in signing the MOU while we were here at Vibrant Gujarat yesterday. Innovation is really the driver, as I mentioned, in green chemistry, green applications, green technologies are what we will bring and build on that foundation that Solaris Chemtech has established in Kavda.
and look forward to the operations that we have going forward as we invest not only in increased manufacturing and so jobs in Gujarat, but also in forming a center of excellence for our chemistries for all of Asia Pacific in working with academia in the region and the state. Yesterday, in Mr. Tata's remarks, he made the statement, and I paraphrase, "It would be stupid not to be in Gujarat." We concur. Thank you. Thank you very much, Mr. Rajasan. We would now like to invite Chairman Torrent Group, Mr. Sudhir Mehta, for his address. Respected and Honorable Chief Minister Shri Narendra Bhai Modi, Honorable Minister of Gujarat, accomplished dignitary from the collaborating countries, distinguished industrial and business magnate, ladies and gentlemen. Under the decade-plus leadership of Shri Narendra Bhai Modi, the Gujarat state has been remarkable progress and is a forerunner in contributing to the robust growth of Indian economy. Gujarat is an innovative, forward-looking and entrepreneurial state. The Vibrant Gujarat Meets is a robust initiative in this context. It is indeed a great pleasure for me to be part of this important event of the Gujarat state. I am indeed impressed by the Gujarat Vibrant Meet. What impressed me more is the rapidly increasing scale of the event, which includes the ever-growing number as well as size of the project initiated here in this podium, and increasing participation from various countries. Gujarat is a role model today not only for the other states in India, but also for all emerging economy. Gujarat today is synonymous with governance, good governance, which puts on the top of pedestal among the developing country and the states. Gujarat is indeed a very peaceful state with one of the lowest crime rate in the country. Thanks to the far-sighted Honorable Chief Minister Shri Narendra Bhai Modi, the state of Gujarat boasts of excellent infrastructure. The Gujarat state is set to become the foremost maritime hub of India with 42 ports. These ports cater to the growing needs for the industrial development of the state and the country by providing access to domestic and international market and handling more than 40% of the nation cargo. Gujarat is in the forefront of the state that have effectively implemented the power reform, as a result of which it carries the distinction of being the only power surplus state in India. Gujarat has played a critical role in nation pursuit for gas energy with establishment of the first LNG terminal in India at Dahej and 2,200 kilometer integrated statewide gas grid. The state also offers superior quality of airport, roads, rail network, which facilitate trade and commerce. The basic need of any business like land, water, etc. are made available without any hindrance. Some of the cities are amongst the fastest growing city in the world. The state has a strong facilitation mechanism at the government level and stable political climate adds to it. The single window approach for investor is an example of the simplification of process which the state has created. The state also fosters a great work culture encompassing quality of entrepreneurship, leadership and enthusiasm. Thus, the Gujarat state has a potent combination of good governance, excellent infrastructure and wonderful facilitation mechanism which makes it much sought after state for industrialized not only for India but from all corners of the world. Warren Buffett, the legendary investor, has said that he was lucky to be born in USA.
the country that provided the right climate for growth, that enabled him to grow rapidly. મને પણ ગુજરાતી હોવાનો ગર્વ છે. Thank you. જય હિન્દ. Thank you, Mr. Mehta. We are privileged to invite His Excellency Mr. Pisan Manwapad, Ambassador Thailand, for his address. Honorable Chief Minister Shri Modi, ladies and gentlemen, I'm very grateful to the Honorable Chief Minister for the privilege to say a few words and for the opportunity for Thailand to participate for the first time in this Vibrant Gujarat Summit. Our own experience over the past days has been more than satisfactory. Like in my 3 previous visits within the past 7 months, I feel each time of my visit to Gujarat, something concrete is always in the making. Something of a rewarding outcome is always in the waiting. I sense this with full confidence that I will enjoy the attention and the full support of the Chief Minister and his officials. Yesterday evening, the Honorable Chief Minister was kind enough to me and my diplomatic colleagues in holding a small group meeting. He was asked what were his priority areas that he would like to see in his interaction with the global economies. I was kind of expecting that he probably will respond emphasizing on business, investment, and economics. I was touched by surprise that he mentioned behind the back of his own people social issues, youth, healthcare, and education. He also mentioned that he would be ready to cooperate with other governments on green energy and on coastline development, since Gujarat enjoys 1/3 of India's coastline. In my small business delegation, I happen to have a top executive of a Thai electronic company, which is number 1 in green energy and power management products. He had discovered during this trip that Gujarat happened to be his company's number 1 customer. And over the working dinner that Index B kindly arranged for us, with the serious discussion over that dinner, my top businessman colleague is convinced that he would seriously like to come and explore setting up his own manufacturing plant in Gujarat. I will follow up, Honorable Chief Minister, with Index B on this, as well as on the coastline development, as several Thai seafood companies are known to have strong expertise and global market connections. Yesterday we heard a lot of praises, admirations, commendations for the Honorable Chief Minister. He certainly deserves them all. So do the people of his own state. But I feel that he is more interested than actions and results. So let me tell his audience
Here, one modest result that the Thai embassy has been able to respond to his own suggestion, the very first suggestion when he saw me last May. I am pleased to announce before you all that because of the Honorable Chief Minister's own blessing, because of his own government officials' full support, as from the 1st of April this year, Thai Airways International, through its own subsidiary Thai Smile, will begin the first direct flight Ahmedabad will be the 9th country in India which Thai Airways International connects with Thailand. And all the wise Gujaratis will no longer have the burden of changing planes in Mumbai or Delhi when they decide to go to Thailand. Let me state before the Honorable Chief Minister and his Tourism Authority how ready I will be his spokesperson to promote tourism in Gujarat among the Thai travelers. I'm inviting the Authority of Tourism in Gujarat to do aggressive trade tourism promotion campaign in Thailand, and I will be there with them. Let me conclude by thanking the Honorable Chief Minister, his entire government and people of Gujarat for a very warm welcome and hospitality, and for the complete success of the Vibrant Gujarat Summit. Thank you very much. Thank you, Your Excellency. We now invite Her Excellency Mrs. S. Bappu Gosk, Minister for Social Security, Mauritius. Shri Narendra Modi, Chief Minister of the State of Gujarat, distinguished Honourable Ministers and Honourable Members of Parliament, industry leaders present, delegates from abroad, distinguished guests, ladies and gentlemen, all protocol observe, Namaskar. I feel highly honoured and privileged to address you this afternoon at this valedictory function of the 6th Vibrant Gujarat Summit 2013, and at the very outset I would like to express my special thanks to you, the Chief Minister, Shri Modi, for your kind invitation extended to myself and my Secretary, and we are really humbled by this proverbial hospitality extended to us. Chief Minister, allow me to tell you how I love being in Gujarat. Only the second time within 1 year, thanks to the privileged collaboration of my ministry with the Entrepreneurship Development Institute of Ahmedabad, that is EDI. What particularly strikes me in Gujarat is not only its economic and human growth, but foremostly the vision, wisdom and humanism of Gandhiji, which shaped the whole persona of Gujarat. I feel, I see and experience the spirit of Gandhiji in your model of development, in your style of leadership, and your boundless belief in better destiny for your people through global togetherness. In this borderless world, no country is an island which can develop independently and in isolation.
Leaders in Gujarat have been rightly inspired in forging partnerships with other economies in pursuit of its sustainable human growth. The Republic of Mauritius, as Gujarat, believes in the virtues of an open economy geared to global cooperation. My country, Mauritius, is a small island state of only 720 square miles off the southeastern coast of South Africa. And today it is focused as the gateway to Africa. A drop in the Indian Ocean, with a population of around only 1.2 million people. A small republic but with a big ambition, intent to creating innovative development that set new standard in design and quality to build. We offer a wealth of investment opportunities to foreign investors. Mauritius' economy is fast growing, and the hospitality and property development sector is one of the fastest growing sectors. Market analysis shows that yields for our real estate in Mauritius average between 10% and 12% a year. A favorable business climate, access to immovable property by non-citizens, the rapidly growing service sector, the low business tax regime, the availability of land for development, a world-class workforce, and a well-developed financial service sector make of Mauritius an ideal investment location and business activities. So Mauritius is one investment destination with many markets to conquer, and I invite Gujarat to come along and Mauritius also to join the bandwagon. Ladies and gentlemen, Mauritius does not only look forward to inward FDI, but an equal focus is on outward foreign investment. India and Mauritius have an age-old history of relationship. Our exchanges in the fields of culture, trade and business, as well as knowledge, date back to the 19th century. India is today one of our major economic partners. Both nations enjoy very strong and friendly relations. India remains our main import market. Imports for 2011 stood at some $1.2 billion US, with major imported products being petroleum products, plastic and linoleum products, cotton yards, fabrics, pharmaceutical and fine chemicals. India is equally on our main export markets. Last year, we exported approximately $15.2 million US worth of goods to India. India has also propelled itself as one of the main investment partners of Mauritius. The Mauritian financial platform has played a key role in driving foreign investments to India, and from 2000, the cumulative Mauritian contribution to India's investment flow, FDI and global business sector combined has amounted to $326.3 billion USD, that is 38% of total equity inflows in India since 2000. So the figures of the Reserve Bank of India indicates that since January 2012, the Mauritius International Financial Center has been one of the preferred financial center of the Indian business community investing abroad. Figures indicate that nearly 4.8 billion USD of investment have been structured through Mauritius by Indian firms looking at investing abroad. This testifies to the fact that Mauritius provides a stable, a trusted, and a well-regulated platform to global investors. Mauritius has the capability
to address every investor requirements. As a direct result of our continuous quest to bring in new reforms, Mauritius has seen significant improvement in its ranking in the World Bank's Doing Business report. We are the first African country to join the league of the top 20 economies in the world as regards the ease of doing business. We have progressed from the 49th position in 2007 to the 19th in the 2012. Mauritius is today home to a number of Indian corporates operating across various sectors. Some of these names include the State Bank of India, the Baroda Bank, the GBOT Financial Technologies Group, the New India Assurance, the Hinduja Group, the Oberoi Hotels, Infosys, Fortis, Apollo Hospital, Amity University, Ajanta Pharma, just to mention a few. So we look forward to leveraging our diaspora and welcoming more Indian businesses in our country, and there is also Gujarat to be on board. We value the business acumen and expertise of Indian business leaders. We hope through these business interaction, Mauritius may succeed to transit to the next phase of its economic growth. So returning home, I pledge, the Chief Minister, that I will inform the Cabinet of Ministers to the vast investment opportunities in Gujarat and urge my colleague, the Vice President, who is the Minister of Finance, under whose responsibility falls the Board of Investment, to field an investment mission to Gujarat for further discussion. And to conclude, I wish all of you success in your endeavors and look forward to the strengthening of our relationship. Thank you for your attention. Thank you, Your Excellency. We are indeed honored to invite Chairman Tata Group, Mr. Cyrus Mistry, for his address. Good afternoon, Honorable Shri Narendra Modi, dignitaries on the dais, and ladies and gentlemen. It is indeed an honor for me to be present at Vibrant Gujarat 2013 and share my thoughts with this audience. I would like to thank the Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Narendra Modi, for inviting the Tata Group and me personally for this event. I now speak at the end of 2 long and fruitful days of deliberations, and therefore I will keep my comments brief. At the outset, I would like to use this platform to recognize and applaud the spirit of entrepreneurship and innovation of the people of Gujarat, both that reside in this state as well as the Gujarati diaspora, and that one gets to meet and interact with from time to time across the country. It is on this foundation that we have seen some remarkable progress and the creation of value for the state. In addition to this spirit, it is also important to recognize the enabling environment and the infrastructure that has been put in place by the government and the various institutions of the state. This has been a catalyst influencing the decisions of many companies to locate their industrial and economic activity here in the state of Gujarat. In Gujarat, we see a culture of implementation at various levels of the government, reflecting the leadership qualities of the Honorable Chief Minister. We at the Tata Group, as committed, have made significant investments in the state of Gujarat, especially in the recent past, from Tata Power's investment in Mundra, Tata Motors in Sanand, Tata Chemicals in Mithapur,
and TCS in Ahmedabad. Our commitment in Gujarat goes beyond our industrial activities and has also been focused on improving the quality of lives in the communities we operate in. We are engaged in programs ranging from promoting skill-based employment, environmental management, primary healthcare, and promoting sustainable development. We continue to remain committed to this strategy going forward as well. The rest of India, and in fact the entire world, will focus on the stability of policy framework set up by the government of Gujarat, providing an environment that attracts investments by institutions such as the Tata Group. In a world filled with uncertainty and volatility, it is extremely important that the proactive and balanced policies of the government of Gujarat be implemented, staying true to their spirit and intent to ensure the long-term sustainability and attractiveness of the state of Gujarat. I am confident that under the leadership of Honorable Chief Minister Narendra Modi, we will see this certainty in policy implementation, and we as the Tata Group and many other Indian and global institutions will continue to invest and grow in this state. Before concluding, I wanted to emphasize the focus of the Tata Group in creating long-term value creation for all its stakeholders. And in this journey, I do consider the state of Gujarat and the Honorable Chief Minister Narendra Modi as a true partner. It has been my pleasure being here with you all here today, wishing you progress and prosperity in the years ahead. Thank you very much. Thank you, sir. We have received a special message of greetings from Honorable Prime Minister of Canada, wishing Honorable Chief Minister Shri Narendra Modi a grand success of this prestigious event which Canada is proud to partner. We are honored to have with us here today Honorable Minister of Citizenship, Immigration and Multiculturalism, Canada, Mr. Jason Kenney. We are honored to invite him for his address. Namaste, Honorable Chief Minister Modi, distinguished guests, ladies and gentlemen. Canada is delighted to have been a country co-sponsor of Vibrant Gujarat 2013 and to have been here in great strength and numbers with what I believe is the largest overseas delegation with more than 200 Canadian delegates participating here at Vibrant Gujarat. I'd like especially to acknowledge and thank my parliamentary colleagues, Patrick Brown, Devinder Shori, and Asha Seth, for having followed in the footsteps of many other Canadian parliamentarians who have helped to build the Canada-Gujarat relationship, which is based on a vibrant Gujarati community in Canada, the fastest growing community of Indian origin in our land, a country of immigration. I would also like to thank the certain leaders, such as the mayors of two of our most dynamic cities, Mayor Susan Fennell of Brampton and Mayor Frank Scarpetti of Markham, for being here, as well as the large delegation from the Indo-Canadian Chamber of Commerce. Canada is not new to Gujarat. Of course, we have had a meaningful commercial relationship led by large Canadian businesses such as McCain's, one of the world's major food processors, which made an exciting announcement today about I think, additional $69 million investment here in Gujarat. And Bombardier, of course, one of the world's largest engineering companies with a significant presence here that we hope will expand in the future. But we're most excited to see leaders from small and medium-sized enterprises present with keen interest on the economic opportunities that are presented. And we're here because we want to be part of the economic miracle that is Gujarat. We're here as well because Canada's is the strongest economy in the G7,
and we are intensely focused on expansion of trade and diversification of our export markets. Canada has had the best rate of economic growth and job creation in the G7 since the global economic downturn, and Chief Minister, Gujarat and Canada have at least this in common: we are two jurisdictions that weathered the international financial storm with great strength and vigor, and have come out stronger for it. Canada has the best rate of economic growth, as I said, and projected to for the foreseeable future by both the World Bank and the IMF in the G7 and amongst the major developed economies of the world. We have the strongest financial institutions according to the World Economic Forum. We have, according to the OECD, the best fiscal position, the lowest deficit and debt in the G7. We have the lowest taxes on new business investment, and we have a government that is relentlessly focused on trade and trade diversification, which means, in part, a particularly keen focus on India. That is why we have, under the leadership of Prime Minister Stephen Harper, had a transformational new approach to Canada-India policy over the course of the past 6 years, a whole-of-India engagement strategy, which is now leading to fruitful negotiations with India towards a comprehensive economic partnership arrangement, and we hope the soon finalization of an investment protection and promotion agreement. All of this was manifest by the 6-day visit that Prime Minister Harper paid to India in November of last year, the longest visit that a Canadian Prime Minister has paid to another country in our modern history. Now, Chief Minister, you will know, as we discussed, that there are particular sectors where there is virtually unlimited potential in the Canada-Gujarat commercial relationship. Canada, of course, one of the world's largest resource countries, and Gujarat needs energy. Canada has a huge surplus of it, with the second largest oil reserves in the world, one of the largest gas reserves, and we are determined to bring those energy resources to Tidewater so that they can help to fuel the growth of Gujarat and India. We have the world's largest reserves of potash, and there have been recent announcements about investments of Gujarat in Canadian potash developments in the province of Saskatchewan to help fertilize the ongoing agricultural revolution in this state and this country. We have the second largest reserves of uranium in the world, and of course India's civilian nuclear technology is in large measure based on Canada's. And we have one of the world's largest reserves of diamonds. And I understand that Gujaratis and Indians like their jewels, and we are keen to sell them. And so I know the Indo-Canadian Chamber of Commerce is pursuing ways in which we can substantially and directly export Canadian rough diamonds to Gujarat in particular. These are just some examples. But we must not lose sight of the fact that there is huge potential in the value-added sector as well, as we've seen with McCain's in bringing its world-class expertise in food processing here. And finally, as the Minister of Immigration, I must not lose sight of the human dimension, tremendous opportunities in education as Canadian colleges and universities develop a presence here and offer educational opportunities in Canada. Now, Chief Minister, I said to you today that we don't want to take all of Gujarat's best and brightest, but we wouldn't mind having a few, at least for a short period of time. And so, Chief Minister, we are deeply honored to have been a partner with you in Vibrant Gujarat. We look forward to deepening this relationship as we've done with the opening of Canada's Trade Promotion Office in Ahmedabad. We believe this is a vital relationship which will be for the tremendous economic and social benefit of both the people of Gujarat and the people of Canada. And so on behalf of Prime Minister Harper, congratulations. Long live Canada, long live Gujarat. Thank you very much, Mr. Kenny. Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Narendra Modi has once again proved
that good governance is good politics. With his bold initiatives, vision and imaginative planning for all-inclusive growth in all sectors and sections of society in the state, the pursuit of progress of Gujarat is his only goal, and leading from the front an apparent habit. A trendsetter in the paradigm shift from appeasement politics to developmental politics, we are honoured to invite Honourable Chief Minister Shri Narendra Modi for his address. Dignitaries on dais, ladies and gentlemen, मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले एक महत्वपूर्ण काम पूरा कर दूं और बाद में सारी बातें बताऊं। मैं यहां खड़ा हुआ हूं आपको इनविटेशन देने के लिए। आप लिख लीजिए 11 जनवरी 2015 7वीं वाइब्रेंट समिट के लिए मैं आपको निमंत्रण देता हूं। ऐसा ही निमंत्रण मैंने जब 2011 में दिया था तो दूसरे दिन हमारे मीडिया के मित्रों ने मेरी पिटाई की थी कि अभी चुनाव बाकी है और मोदी 2013 का इन्विटेशन कैसे दे रहे हैं। इस बार ऐसा संकट नहीं है। तो मैं आप सबको बड़े उमंग और उत्साह के साथ, नए सपनों के साथ, नई उम्मीदों के साथ फिर एक बार गुजरात वाइब्रेंट समिट में आने के लिए निमंत्रण देता हूं और मुझे विश्वास है आप अवश्य आएंगे। मित्रों, ये जो वाइब्रेंट समिट आपने अनुभव किया, देखा, सुना, विश्व भर के जितने भी लोग आते हैं उन सबके लिए एक अजूबा है। मित्र, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में मैं भी गया हूं, मैं भी सेमिनार्स में गया हूं, लेकिन इतने बड़े स्केल पर, इतनी माइन्यूट डिटेल के साथ, इतनी विविधताओं के साथ, इतनी सारी मल्टीपल एक्टिविटी को जोड़ करके शायद ही विश्व में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होता होगा। इस काम को सफल करने में अनेक लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मदद की है, जिम्मेवारी उठाई है, परिश्रम किया है। मैं इस मंच से इसे सफल बनाने वाले सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। गुजरात की जनता की तरफ से इस कार्य को सफल बनाने में जुड़े हुए सबका मैं अभिनंदन करता हूं।
भाइयों बहनों, इस इवेंट को अनेक पहलुओं पर लोगों का ध्यान जाता है, लेकिन एक बात की और भी नजर करने की आवश्यकता है। करीब 121 देश के लोग यहां आए। ये पूरा नजरिया उन्होंने देखा। पल भर के लिए कल्पना कीजिए मित्रों, इन 117 देशों के 2100-2200 लोग जब अपने देश जाएंगे, अपनों से बातें करेंगे, तो क्या कहेंगे? वो यही कहेंगे, मैं हिंदुस्तान गया था, मैं इंडिया गया था, मैं भारत गया था। इसका मतलब सीधा सीधा है मित्रों, ये इवेंट से दुनिया के 121 से अधिक देशों में हम एक संदेश पहुंचाने में सफल हुए हैं कि यह भी एक हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान का यह भी एक सामर्थ्य है। मित्रों, दुनिया के 121 देशों में इस हमारे एक इवेंट ने 121 देशों में नए एम्बेसडर्स का जन्म दिया है। और ये हमारे देश के नए एम्बेसडर्स, उनका चमड़ी का रंग कुछ भी क्यों न हो, उनकी भाषा क्यों न कोई भी हो, लेकिन जब कभी हिंदुस्तान का जिक्र आएगा, मैं विश्वास से कहता हूं, इन 121 देशों के ये लोग हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छा बोलेंगे, बोलेंगे और बोलेंगे। एक देश के नागरिक के लिए इससे बड़े गर्व की बात क्या हो सकती है मित्रों? इतने देशों में इतने गौरवपूर्ण रूप से हमारे देश की चर्चा हो, हमारे देश की तारीफ हो, हमारे देश की अच्छाइयों की बात हो, मित्र, हर हिंदुस्तानी के लिए ये सीना तान करके याद करने वाली घटना घटती है। और इसलिए इस पूरे समारोह को परिश्रम भले गुजरात के लोगों ने किया होगा, धरती भले गुजरात की होगी, इवेंट के साथ भले गुजरात का नाम जुड़ा होगा, लेकिन ये भारत की आन बान शान को बढ़ाने वाली घटना है। इस बात को हमें स्वीकृत करना होगा। भाइयों बहनों, इस इवेंट से मैं देख रहा था, जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जिनके अपने कुछ सपने हैं, साधन भले सीमित होंगे, लेकिन ऊंची उड़ान का जिनका इरादा है, कुछ नया करके दिखाने की जिनकी इच्छा है, ऐसे हजारों नौजवान इस समिट के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हैं। इन सबको कभी दुनिया के हर देशों में जाने का अवसर नहीं मिलने वाला है, और जब तक अवसर मिले तब तक उनको एक्सपोजर नहीं मिलने वाला है। मित्र, इस इवेंट के कारण, इस एग्जीबिशन के कारण, दुनिया के इतने देशों के लोगों के साथ बातचीत करने के कारण, हमारे देश के, हमारे गुजरात के जो उभरते हुए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो उभरती हुई पीढ़ी है, उस पीढ़ी का एक विश्वास पैदा होता है कि हां यार, दुनिया इतनी बड़ी है, इतना सारा है, चलिए हम भी कुछ छोर को हाथ लगा लें, हम भी उस दिशा में आगे बढ़ जाएं। ये विश्वास पैदा करता है। मित्रों, कभी हम स्वीकार करें या न करें, हम माने या न माने, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर एक फियर,
हमेशा अस्तित्व रखती है। मैं हूं, यहां बैठे हुए हो, यहां बैठे, हर एक के मन में होती है। और वो फियर क्या होती है? अननोन की अपने आप में फियर होती है। आप अगर पहली बार मुंबई जाते हैं तो आपके मन में फियर रहती है। आपके लिए मुंबई अननोन है, फियर रहती है, कैसा होगा, कहां जाऊंगा, किसको मिलूंगा, कैसे शुरू करूंगा। आपके मन के अंदर एक छुपा हुआ भय रहता है। ये बहुत स्वाभाविक है। मित्रों, इस इवेंट के कारण दुनिया के इतने देशों को देखना, मिलना, समझना, सुनना, उसके कारण मेरे देश की, मेरे राज्य की जो नई पीढ़ी है, उनके लिए जो अननोन फियर का जो सेंटिमेंट है, वो अपने आप खत्म हो जाता है और विश्वास के बीज बो देता है। अगर वो यहां किसी न्यूजीलैंड के व्यक्ति को मिला है तो न्यूजीलैंड जाने से पहले उसको न्यूजीलैंड के विषय में विश्वास पैदा हो जाता है। अननोन फियर उसके मन में होती नहीं है। मित्रों, एक मनोवैज्ञानिक परिणाम होता है और उस मनोवैज्ञानिक परिणाम की अपनी एक ताकत होती है। मैं नहीं मानता हूं जो रुपयों पैसों के तराजू को लेकर के बैठे हैं उनके लिए इन बातों को समझना संभव होगा। शायद मेरी 10 समिट होने के बाद कई लोग ऐसे होंगे जिनको समझदारी शुरू हो जाएगी। मित्रों, कोई कंपनी, कोई राज्य अरबों खरबों रुपया खर्च के कोई पीआर एजेंसी हायर कर लें, दुनिया के अंदर वो कंपनी या कोई स्टेट अपनी ब्रांडिंग के लिए कोशिश करें। मैं दावे से कहता हूं मित्रों, इतने कम समय में गुजरात ने जो अपना ब्रांडिंग किया है, शायद दुनिया की 10 ऐसी कंपनियां इकट्ठी हो ये स्थिति पैदा नहीं कर सकती है। और कैसे हुआ है? वो इसलिए हुआ है कि हमने प्रारंभ से एक मंत्र लिया। लोग भिन्न भिन्न माध्यम से गुजरात के विषय में जानते थे। मैं पहली बार जब 2003 में लंदन गया था, समिट को सफल करने के लिए मैं लोगों से मिलने गया था। उधर ऑस्ट्रेलिया की तरफ गया था। लोगों को मैं बता रहा था आप गुजरात आइए। तब लोगों के मन में एक जिज्ञासा था। पूछते थे गुजरात कहां है। मुझे कहना पड़ता था मुंबई से नॉर्थ में 1 घंटे का फ्लाइट है। आज लोग कहते हैं मुंबई जाना है तो गुजरात के पास ही है। मित्रों, ये चीजें सामान्य नहीं है। इसके लिए सोच समझ करके हमने पुरुषार्थ किया है। और तब मैं जब पहली बार गया था, उस समय हिंदुस्तान की एक परंपरा क्या थी? परंपरा ये थी कि हिंदुस्तान के राजनेता विदेशों में जाते थे, अपने स्टेट में निकलने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। मुख्यमंत्री जाते थे और कहते थे हम इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं। दुनिया के किसी देश में जाते थे, 2-4 एमओयू करते थे, फिर वापस आते थे और दुनिया को बताते थे हम इतने एमओयू करके आए हैं, और उस टूर को सफल माना जाता था। और फिर कभी मीडिया उनको पूछता नहीं था कि भाई आप वो जाके आए थे उसका क्या हुआ। वो उस समय का जमाना वैसा था। मित्र, हमने 2003 के पहले ईश्वर ने क्या हमें समझ दी होगी, क्या ऐसा विचार दिया होगा। मैं ईश्वर का आभारी हूं कि मैंने डे 1 से काम किया। मैंने कहा हम दुनिया के देशों में जाके लोगों को समझाएंगे, बात करेंगे, लेकिन हम वो काम नहीं करेंगे
जो आमतौर पर हिंदुस्तान की सरकारें करती हैं। मित्रों, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं एक दृष्टिकोण में बदलाव कैसे आता है वो दिखाना चाहता हूं। और मैं जब विदेशों में गया तो मैंने लोगों से कहा था, लोग मुझे कहते थे कि आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा मैं कुछ नहीं चाहता हूं, मैं इतना ही चाहता हूं सिर्फ एक बार गुजरात आइए। और मैं कहता था फील गुजरात। इतनी छोटी सी बात मैं कह के आया हूं दुनिया को, फील गुजरात। आज मित्रों, जो लोग गुजरात की धरती पर आते हैं, और मेरी मिट्टी की कसम कह करके मैं कहता हूं, इस मिट्टी की ताकत इतनी जबरदस्त है, हमारे पुरखों ने इतना परिश्रम करके संजाई हुई ये ऐसी मिट्टी है, यहां आने वाला हर व्यक्ति उसके सुगंध से अभिभूत होकर के दुनिया के देशों में जाकर के अपनी बात बताता है। मित्रों, कल मंच पर से पूछा गया था, पता नहीं गुजरात की मिट्टी में ऐसा क्या है। ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, हर किसी के मन में उठता है। पहले नहीं उठता था, अब तो उठता ही है। भाइयों बहनों, इस मिट्टी में एक पवित्रता है, और इस मिट्टी में हमारे पुरखों का पसीना है। इस धरती को हमारे पुरखों ने अपने खुद के पसीने से सींचा है, और तब जाकर के ये धरती उर्वरा बनी है। और इस धरती के अन्न को खाने वाला भी उसी उर्वरा और शक्ति का भरा हुआ होता है, जो दुनिया के साथ आंख में आंख मिलाने का सामर्थ्य रखता है। भाइयों बहनों, हम विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना चाहते हैं। अगर हम जगत को जानेंगे नहीं, जगत को समझेंगे नहीं, बदलती हुई दुनिया को पहचानेंगे नहीं, हम उनसे बात नहीं करेंगे, तो हम एक कुएं के मेढक की तरह अपनी दुनिया में मस्त रहेंगे। और हो सकता है हमारी जिंदगी पूरी हो जाए, तब भी हमें आनंद ही आनंद रहेगा, बहुत कुछ हुआ। लेकिन जब बदलते हुए विश्व को देखेंगे, जहां समृद्धि पहुंच चुकी है उस विश्व को देखेंगे, तो हमारे भीतर भी होगा, अरे यार वो यहां पहुंच गए, हमें तो अभी पहुंचना बहुत देर बाकी है। और तब जाकर के दौड़ने की इच्छा जगती है, चलने का मन कर जाता है, नए सपने जगते हैं, और परिश्रम करने की पराकाष्ठा होती है, और परिवर्तन आने की संभावना पैदा होती है। और इसलिए भाइयों बहनों, इसलिए समय की मांग है कि हम बदले हुए युग में किसी भी विषय में विश्व से अलग नहीं रह सकते हैं। अपने आप को दुनिया से अलग थलग कर करके कोने में बैठ करके हम अपनी दुनिया को आगे बढ़ाने के सपनों को कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं। और इसलिए बदलते हुए विश्व को समझने का अवसर इस प्रकार की समिट से मिलता है। मित्रों, मुझे खुशी है, गुजरात के सामान्य परिवार के लोग लाखों की तादाद में ये एग्जीबिशन देखने के लिए कतार में खड़े हैं पिछले 5 दिन से। क्यों? उनको तो कुछ लेना बेचना नहीं है, वो जहां देखेगा उसे कोई उसकी दुनिया बदल जाने वाली नहीं है। लेकिन हमने एक अर्ज पैदा की है, और ये हमारी सबसे बड़ी सफलता है कि मेरे राज्य के सामान्य से सामान्य नागरिक के भीतर हमने एक अर्ज पैदा की है कि उसका भी मन करता है, चलो यार क्या अच्छा है, जरा देखे तो सही। उसको लगता है, हो सकता है आज देखेंगे तो कल पाएंगे भी सही। मित्रों, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बदलाव है। उस बदलाव को हमें समझने की आवश्यकता है। और इस समिट के माध्यम से मैं मेरे गुजरात की एक बहुत बड़ी शख्सियत और शक्ति का
चाहे गांव हो, तहसील हो, जिला हो, वहां पर समाज जीवन को संचालन करने वाली एक शक्ति रहती है। उस शक्ति के अंदर समिति के माध्यम से नए सपनों को संजोने का, नई दिशा को पकड़ने का, एक नया आयामों की ओर जाने का एक नया अनफोल्डमेंट कर रहा हूं मित्रों। ये समिति उस अनफोल्डमेंट का कारण बन रही है। ये बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है मित्रों। किसी भी गुजराती को गर्व होता है आगरा में बैठे हुए व्यक्ति को एक साल में 200 देशों के लोग ताजमहल देख करके जाएंगे तो भी आगरा का आदमी वो गौरव अनुभव नहीं करता है। क्योंकि ताजमहल बनाने वाले ने बनाया, ईश्वर की इच्छा थी जो महाशय का आगरा में जन्म हुआ, और आने वाले आने को पता चला है दुनिया की एक अजायबी है, चलो मैं भी जाऊं, फोटो निकलवा के आ जाऊं। अपनापन महसूस नहीं होता है। लेकिन इस धरती पर अपने पसीने से कोशिश कर करके दुनिया के 117 देश, 121 देश के लोग आए तो हमारे सब लोगों को लगता है यार मेरे मेहमान है, ये मेरे अपने हैं। और मित्रों, मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये बात भी जो मैं कह रहा हूं वो बहुत लोगों के समझने के बाहर की भी चीज है। वो समझेंगे, उनके लिए मैं समझ छोड़ के रखता हूं। मित्रों, इस 121 देश के लोगों का यहां आना, हर वाइब्रेंट समिट में आने वालों की संख्या भी काफी है। अनेक देश के लोग हैं जो हर वाइब्रेंट समिट में आते हैं। मित्रों, बार बार यहां आने से इस धरती के प्रति उनका भी लगाव हो रहा है, उनको अपनापन महसूस हो रहा है। आपने देखा होगा इतने सारे देशों के लोग, हर किसी की कोशिश है नमस्ते बोलने की, हर किसी की कोशिश है केमछो बोलने की। वो अपने आप को इस मिट्टी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। यहां की परंपरा, यहां की संस्कृति, इससे अपने आप को जोड़ने का उसको उमंग है। इसका मतलब यह हुआ मित्रों, जिसको हम किसी थर्मोमीटर से माप नहीं सकते, किसी पैरामीटर से नाप नहीं सकते, ऐसी एक घटना आकार ले रही है। और वो घटना क्या है? दुनिया के अनेक लोगों का गुजरात के साथ बॉन्डिंग हो रहा है। और मित्रों, मैं मानता हूं, और ये मेरी बात आने वाले दिनों में सत्य होकर के सिद्ध होगी, और मैं साफ मानता हूं ये जो बॉन्डिंग है वो अमूल्य है। इसका कोई हिसाब किताब नहीं लगा सकते। और मैं विश्वास से कहता हूं कि दिस बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन द ब्रांडिंग। गुजरात के ब्रांड की जितनी ताकत है मित्रों, उससे ज्यादा गुजरात के साथ जो बॉन्डिंग हो रहा है वो पीढ़ियों तक रहने वाला काम इस धरती पर हो रहा है मित्रों। गुजरात में कोई भी घटना घटेगी, अच्छी हो या बुरी, आप विश्वास कीजिए मित्रों, इन सब के देशों में गुजरात की चर्चा अवश्य होगी। अच्छी बुरी घटना के साथ उनका भी मन जुड़ा होगा। मित्र, एक अर्थ में गुजरात का ये विश्व रूप खड़ा हो रहा है। एक्सपांशन ऑफ गुजरात, एक नया विश्व रूप गुजरात का खड़ा हो रहा है। मित्र, इतने कम समय में एक राज्य का विश्व रूप बनना, यह अपने आप में बहुत बड़ी सिद्धि है। और इस सिद्धि को नापने के लिए आज के प्रचलित जो परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, वो कभी काम नहीं आएगी। एक दूसरे नजरिए से देखना पड़ेगा। भाइयों बहनों,
दुनिया के इतने सारे देश के लोग हमारे उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को भी गुजराती खाना खाना हो तो पूछता है, यार उसमें गुड़ तो नहीं डाला है ना, दाल मीठी तो नहीं होगी ना, उसके मन में सवाल रहता है। मित्रों, जिनको 1 घंटा नॉनवेज के बिना चलता नहीं है, ऐसे 121 देश के नागरिक 2 दिन अपनी परंपराएं छोड़ करके हमारी गुजरात की जो भी वेजिटेरियन डिश है उसका मजा ले रहे हैं। मित्रों, क्या ये छोटी चीज है क्या? मित्रों, इस समिट को मैंने कहा था कि मेरे दिमाग में हमारे देश की युवा शक्ति है, मेरे राज्य का युवा धन है। हम लंबे अरसे तक इंतजार नहीं कर सकते मित्रों। हमने हमारे राज्य के युवकों को सज्ज करना होगा। बदलते हुए विश्व के अंदर अपनी ताकत से सर ऊंचा करके निकल पाए, ये स्थिति हमारे नौजवानों के लिए हमें पैदा करनी होगी। और ये हम सबका दायित्व है, सरकार के नाते दायित्व है, समाज के नाते दायित्व है, शिक्षा संस्थाओं के नाते दायित्व है। हमें उनको सज्ज करना होगा। लेकिन एक दो प्रयासों से ड्रास्टिक चेंज नहीं आता है दोस्तों। छूट-फूट प्रयासों से इंपैक्ट क्रिएट नहीं होता है। इसके लिए तो एक सामूहिक रूप से बड़े फलक पर और बड़े एग्रेसिव मूड में उस विराटता के दर्शन कराने होते हैं, तब जाकर के बदलाव आता है। मित्रों, कभी कभी हमारे शास्त्रों से हम भी कुछ सीख सकते हैं। छोटे से कृष्ण ने मिट्टी खाई। मैं नहीं मानता हूं मक्खन खाने वाले व्यक्ति को मिट्टी खाने का शौक होगा, लेकिन कोई न कोई तो रहस्य होगा, तभी तो मिट्टी खाई होगी। और मिट्टी छुप करके नहीं खाई थी, मां यशोदा देख ले उस प्रकार से खाई थी। मां यशोदा को गुस्सा है उस प्रकार से मिट्टी खाई थी। और तब जाकर के मां यशोदा ने मुंह खोला और पूरा विश्व रूप का दर्शन हुआ, और तब जाकर के यशोदा ने कृष्ण की ताकत को स्वीकार किया था। मित्र, मनुष्य का स्वभाव है, यशोदा को भी शक्ति का साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक उसको शक्ति की अनुभूति नहीं होती थी। इसलिए हमारी इस नई पीढ़ी को भी हमें शक्ति का साक्षात्कार कराना होता है। और उस मूल विचार को लेकर के हमने इस बार नॉलेज को केंद्र में रखते हुए विश्व के अनेक देशों से गणमान्य यूनिवर्सिटीज को बुलाया। मित्रों, मैं पूरे विश्वास से कहता हूं, आज तक दुनिया में कहीं पर भी दुनिया के अलग अलग देशों की 145 यूनिवर्सिटीज एक रूफ के नीचे इकट्ठी हुई हो और उस राज्य के लोग उन 145 लीडिंग यूनिवर्सिटीज के साथ बैठ करके 2 दिन संवाद करके अपने राज्य के युवा जगत को कहां ले जाना, उसकी ब्लूप्रिंट तैयार करते हो। ये घटना दुनिया में कहीं नहीं हुई है दोस्तों। मुझे गर्व है वो घटना मेरे गुजरात में घट गई, इस वाइब्रेंट समिट के साथ घटी। मित्र, 145 यूनिवर्सिटीज का एक स्थान आना और गुजरात आज जहां है उसको ध्यान में रखते रुक करके चर्चा करके आगे बढ़ने के सपने संजोना और रोड मैप तैयार करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शुभ शुरुआत है। मित्रों, हम इस बात को मान करके चलते हैं कि भारत 21वीं सदी का नेतृत्व करेगा, ये सद इच्छा हम सबके दिलों में पड़ी है। और
विश्वास भी इसलिए पैदा होता है कि 21वीं सदी ज्ञान की सदी है और जब जब मानव जात ज्ञान युग में प्रवेश किया है हमेशा हमेशा हिंदुस्तान ने विश्व का नेतृत्व किया है। ये सद्भाग्य है कि हमारे रहते हुए हम उस ज्ञान युग के अंदर प्रवेश किया है और 21वीं सदी हिंदुस्तान की होने की संभावना है। अगर ये पीठिका तैयार है तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि विश्व जिस ज्ञान की ऊंचाइयों को प्राप्त किया है उस ज्ञान की ऊंचाइयों को छूने का सामर्थ्य हमारी युवा पीढ़ी में आना चाहिए, हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आना चाहिए, हमारी संस्थाओं में उस प्रकार का नेचर बनना चाहिए। और उसके लिए एक प्रयास इस वाइब्रेंट समिट के साथ किया। मित्र, पूरे विश्व को हम बूढ़ा हुआ देखते रहते हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं विश्व बहुत तेजी से बुढ़ापे की ओर जा रहा है। दुनिया के कई देश हैं, अगर चौराहे पर खड़े होंगे घंटे भर देखोगे लोगों को जाते हुए तो बड़ी मुश्किल से 5% 2% नौजवान दिखेंगे, ज्यादातर बूढ़े लोग जा रहे हैं। आज विश्व में एक अकेला हिंदुस्तान है जो विश्व का सबसे युवा देश है। 65% मेरे देश के 65% नागरिक 35 से कम आयु के हैं। जिस देश के पास इतनी बड़ी युवा शक्ति हो, ज्ञान का युग हो, तो क्यों मित्रों, जब हम स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती मना रहे हैं और आज जब स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती का जन्मदिन है, उस पर हम जब बात कर रहे हैं, तब क्या हम लोगों का दायित्व नहीं है कि हम सब मिलकर के स्वामी विवेकानंद जी के उस 150 साल जिस व्यक्ति के जन्म को हुए हैं और जिसने आज से 125 साल पहले सपना देखा था, क्या 125 साल बीत गए, क्या कभी हमने सोचा है कि विवेकानंद जैसे महापुरुष के सपने क्यों अधूरे रहे, क्या कमी रह गई? उन्होंने सपना देखा था और उन्होंने विश्वास से कहा था कि मैं मेरी आंखों के सामने देख रहा हूं, मेरी भारत माता जगत गुरु के स्थान पर विराजमान है, दैदीप्यमान तस्वीर में मेरी भारत मां की देख रहा हूं, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। मित्रों, क्या समय की मांग नहीं है कि हम जब 150 साल मना रहे हैं विवेकानंद जी के, तो उनके सपनों को साकार करने के लिए हम अपने आप को सज्ज करें, प्रतिबद्ध करें, प्रतिज्ञित करें और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा कर करके इस भारत मां को जगत गुरु के स्थान पर विराजमान करने का सपना लेकर के आगे बढ़े। जिस देश के पास इतनी बड़ी युवा शक्ति हो, वो देश क्या कुछ नहीं कर सकता है। उसकी भुजाओं में सामर्थ्य हो तो जगत की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम अपने आप को सज्ज क्यों नहीं कर सकते हैं। मित्रों, इतने बड़े सपने को पूरा करने का भी बहुत छोटी सी शुरुआत से संभव होता है और हमने बल दिया है स्किल डेवलपमेंट पर। इस पूरे समिट में हम उस बात पर बल रहे हैं कि सारे दुनिया को वर्कफोर्स की जरूरत है, स्किल मैन पावर की जरूरत है। विश्व की कौन सी आवाज, आज मैं यूके के लोगों के साथ बात कर रहा था, ब्रिटिश डेलीगेशन के साथ, वो मुझे पूछ रहे थे आपको क्या आवश्यकता है। मैंने उनको अलग पूछा, मैंने कहा कि आप बताइए आपको 10 साल के बाद किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसका हिसाब लगाया है क्या? मैंने कहा हिसाब लगाइए और हमें बताइए, हम उसकी पूर्ति के लिए अपने आप को अभी से तैयार करेंगे। दुनिया को नर्सिस चाहिए, दुनिया को टीचर्स चाहिए, दुनिया को लेबरर्स चाहिए। और मित्रों, मेरा सपना है, अभी भी मैं कहता हूं, कुछ बातें हैं कुछ लोगों के पल्ले पड़ना संभव नहीं है दोस्तों। लोगों को लगता होगा कि यहां से मारुति एक्सपोर्ट हो, लोगों को लगता होगा यहां से फोर्ड एक्सपोर्ट हो, लोगों को लगता होगा यहां से की प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो। मित्रों, मेरा तो सपना यह है कि मेरे यहां से टीचर एक्सपोर्ट हो। मित्र, एक व्यापारी जब दुनिया में जाता है तो डॉलर और पाउंड जमा करता है,
लेकिन एक टीचर जाता है तो पूरी एक पीढ़ी का कब्जा करता है। ये ताकत होती है टीचर में। और जब विश्व को मांग है और हमारे पास नौजवान है, तो क्यों न इस दिल का मेल करके हम दुनिया में हमारे टीचर्स को पहुंचाए। विश्व की आवश्यकता भी पूरी होगी, हमारे नौजवानों का भाग्य भी बदलेगा। मित्रों, पूरी सोच बदलने की आवश्यकता है और उस सोच को बदलने की दिशा में इस समिट के माध्यम से समाज और राष्ट्र के अंदर किस प्रकार के बदलाव आने चाहिए, वो दुनिया के साथ मिल बैठ करके हम सोच करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी अर्थ में मैं कहता हूं, ये इवेंट मित्रों सबसे सफल इवेंट मैं मानता हूं। 2003 में हमने जब पहली बार वाइब्रेंट समिट की, गुजरात के व्यापारी उद्योगकार, हिंदुस्तान के व्यापारी और उद्योगकार, ये सब मिलकर के जितनी संख्या आई थी 2003 में, 2013 में उससे 4 गुना ज्यादा विदेश की संख्या आई है। उस समय सब मिला करके जीत रहे थे। हमने छोटे से टागो हॉल के अंदर किया था और कहीं मीडिया की नजर में हमारी बुराई न हो, तो मैंने कहा था पीछे यार कुछ लोग बैठ जाना ताकि भरा हुआ दिखाई दे। क्योंकि पहली बार प्रयोग करता था, लोग सवाल उठा रहे थे क्यों आएंगे गुजरात लोग। उस नकारात्मक चीज में से ये रास्ता खोजने की कोशिश की और आज 2013 हम देख रहे हैं मित्रों क्या हालात। मैं तो कहता हूं मित्रों, अगर मेरा ये वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ये कंसेप्ट डेवलप न हुआ होता तो शायद ये महात्मा मंदिर भी न बनता। इतना बड़ी व्यवस्थाएं खड़ी क्यों हो रही है? ये व्यवस्था इसलिए खड़ी हो रही है कि हमें लग रहा है कि हम विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए अपने आप को सज्ज कर रहे हैं। मित्रों, यहां जो व्यवस्था में नौजवान लगे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, एक हफ्ते के लिए यहां स्पेशली उनकी ट्रेनिंग भी हो रही, देख रहे हैं। मित्रों, उनके आंखों में कॉन्फिडेंस देखिए आप। इतना बड़ा इवेंट उन्होंने सिर्फ देखा है, किसी को कहा होगा इधर जाइए, किसी को कहा यहां बैठिए, किसी को यही काम किया होगा। इतने मात्र से व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों की आंखों में इतनी चमक आई है, तो मित्रों मेरे पूरे गुजरात में जो लोग इस निर्णय प्रक्रिया में शामिल होते हैं, उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आएगा हम सीधा सीधा देख सकते हैं। मित्रों, बाहर कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, हमें गुजरात को नई नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। हमने पिछले वर्ष एक छोटा सा प्रयोग किया। वो प्रयोग था एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। कभी मैंने देखा था इजराइल के अंदर जब एग्रीकल्चर फेयर होता है तो मेरे गुजरात से कम 2000 किसान हजारों रुपया खर्च करके इजराइल के एग्रीकल्चर फेयर को देखने के लिए जाते हैं। कुछ कोऑपरेटिव वाले भी जाते हैं, लेकिन उनको तो खर्च का प्रबंध वहां से हो जाता है, लेकिन सामान्य किसान भी जाता है। और तब मैंने सोचा कि मेरे किसानों के लिए भी कुछ करना चाहिए। हमने 2012 में पहली बार दुनिया के देश के लोगों को, एग्रो टेक्नोलॉजी क्षेत्र के लोगों के यहां बुलाया। इसी महात्मा मंदिर में ऐसा ही बड़ा मैंने किसानों का कार्यक्रम किया था। इतने ही शान से किया था। प्रारंभ था, हिंदुस्तान के करीब 14 राज्य उसमें शरीक होने के लिए आए थे। और उसकी सफलता को देखकर के मित्रों हमने निर्णय किया है कि हम जैसे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करते हैं, वैसे ही 2014 में, फिर 16 में, फिर 18 में
एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी कैसे आए, फूड प्रोसेसिंग में कैसे हो, वैल्यू एडिशन कैसे हो, इन सारे विषयों को मैं मेरे गांव तक ले जाना चाहता हूं, किसान तक ले जाना चाहता हूं और सारी दुनिया को मैं यहां लाना चाहता हूं। मित्रों, मेरा किसान देखे, उसको समझे, हम उस दिशा में प्रयास करने जाते हैं। मित्रों, हमने विकास की नई ऊंचाइयों को पार किया। उसमें आज मैं एसएमईज के साथ बैठा था और एक बात हमारे एसएमई सेक्टर में आज ध्यान में आई है कि हमें अपनी कंपनी का जो भी हम उत्पादन करते हैं घरेलू बाजार तक सोच करके न करें, हम दुनिया के बाजार में कदम रखना चाहते हैं, उस दिशा में हमारी छोटी छोटी कंपनियां भी जाएं। और मित्रों, सब संभव है। ये कोई चीन का ही ठेका नहीं है तो माल पैदा करे और हमारे बाजार में डाल दे। हमने भी दम है, हम दुनिया के बाजार में जाकर के सीना तान करके हम माल दे सकते हैं। मित्रों, ये मिजाज होना चाहिए, वरना मैंने देखा कभी कभी तो व्यापारी मिलते, साहब क्या करे, व्यापार खत्म हो गया। मैंने कहा क्यों? अरे छोड़ो साहब, पहले तो अम्ब्रेला बेचता था, लेकिन अब तो चाइना से इतना बड़ी मात्रा में अम्ब्रेला आता है कि मेरा अम्ब्रेला बिकता नहीं। अरे रोते क्यों रहते हो भाई? हम चाइना के बाजार में जाकर एक अम्ब्रेला बेचने का मूड बनाए, हम दुनिया को बेच सकते हैं। मित्रों, मैं ये वातावरण बदलना चाहता हूं मित्रों, और इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं। हम एग्रीकल्चर सेक्टर में भी उसी प्रकार से जाना चाहते हैं। मित्रों, आज अभी देखा कनाडा से एक्सेलेंसी मिनिस्टर यहां आए, उन्होंने अभी कहा कि वो यहां कनाडा का जो उनका ऑफिस है उसको और अपग्रेड कर रहे हैं। उनको लगता है कि रेगुलर उनके काम के लिए जरूरी हो गया है। मुझे आज यूके के हाई कमिश्नर बता रहे थे कि यहां का जो ब्रिटिश एम्बेसी का जो यहां का चैप्टर है उसको वो इक्विवेलेंट तो मुंबई बनाने जा रहे हैं। अब कितनी सुविधाएं बढ़ेगी मित्रों। मित्रों, गुजराती आर बेस्ट टूरिस्ट। इन्होंने हफ्ते में एक दिन थाईलैंड से विमान की सेवा शुरू करने के लिए कहा है। देखना, 3 महीने में हफ्ते में 3 दिन न करे तो मुझे कहना। मित्रों, ये एक छोटी छोटी चीजें हैं, इसकी अपनी एक ताकत है। मित्रों, आप देखिए मित्रों, गुजरात ने एशिया में अपनी जगह बनानी चाहिए। एशियन कंट्रीज में उसने अपनी एक जगह बनानी चाहिए, और जगह बनाने के लिए एक रास्ता है, भगवान बुद्ध। बहुत कम लोगों को समझ आता होगा। और मित्रों, थाईलैंड और गुजरात का ये नाता सिर्फ एक विमान की सेवा का नहीं है। थाईलैंड और गुजरात की इस सीधी विमान की सेवा गुजरात की धरती पर जो बुद्ध की अनुभूति है, और थाईलैंड जो बुद्ध का भक्त है, इस बुद्ध को माध्यम से थाईलैंड और गुजरात का जुड़ना, जापान का और गुजरात का जुड़ना, श्रीलंका और गुजरात का जुड़ना, एशियन कंट्रीज के बुद्धिज्म का गुजरात के बुद्ध की प्रेजेंस का जीना। और हम भाग्यवान हैं कि हमारे पास भगवान बुद्ध के रिलिक्स है। सारी दुनिया हमारे भगवान बुद्ध के रिलिक्स को हाथ लगाकर देख सकती है। हम इसके माध्यम से जोड़ना चाहते हैं पूरे एशिया को गुजरात के साथ। सिर्फ टीचर्स छोड़ भेज करके मैं काम अटकने वाला नहीं मेरा। मित्र, बहुत सारे सपने मन में पड़े हुए हैं, और ये समय नहीं कि सब बातें पूरी कर दूं आज ही। लेकिन भाइयों बहनों, यह राज्य सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए संकल्पबद्ध है। हम गुजरात के सामान्य से सामान्य जीवन की भलाई के लिए कोशिश करने वाले लोग हैं। मैंने देखा कि इस बार एक सेमिनार पूरा अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए था, और दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनियां जल्दी से जल्दी मकान कैसे बने, सस्ते से सस्ता मकान कैसे बने, अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी से मकान कैसे बने, कम से कम जगह में बड़े टावर कैसे खड़े किए जाए, उन सारे विषयों पर आज चर्चा कर रहे थे। ये चर्चा क्या गरीब की भलाई के काम आने वाली नहीं है? लेकिन ये कौन समझाए?
मित्रों, यहां कृषि के क्षेत्र में जो बदलाव आए हैं उसकी चर्चा करने वाले डेलीगेशन यहां है, और कृषि के क्षेत्र में क्या नई टेक्नोलॉजी लेकर के आए हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, हमने एक एमओयू किया कनाडा के साथ, और पहली बार हमारे गुजरात की एक कंपनी मल्टीनेशनल के रूप में कनाडा में जाकर के उद्योग शुरू कर रही है। उद्योग शब्द आते ही लोगों का कान भड़क जाते हैं। उद्योग यानी पता नहीं कोई बड़ा पाप है, ऐसा एक माहौल देश में बनाया दिया गया। मेरी ये कंपनी कनाडा में जाके क्या करेगी? कनाडा में जाकर के वहां की सरकार से मिल करके वहां हम पोटास का कारखाना लगाएंगे, और वो पोटास मेरे गुजरात के किसानों के खेत में काम आए, इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। उद्योग शब्द सुनते ही लोगों को भड़क आ रही है, जैसे कोई पाप हो रहा है। मित्रों, जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव कैसे आए, क्वालिटी ऑफ लाइफ में कैसे परिवर्तन आए, विश्व की बराबरी करने का सामर्थ्य हमारे में कैसा पैदा हो, इस समिट के माध्यम से जीवन के सभी क्षेत्रों को स्पर्श करने का हमने प्रयास किया है। यह हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के संबंध में बहुत बड़े हमारे सेमिनार हुए। ये जो इन्वेस्टमेंट के अंदर काफी लोग आए हैं, वो टेक्सटाइल फील्ड के लोग ज्यादा आए हैं। जो लोग उद्योग को गाली देने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, मेरा किसान जो कॉटन पैदा करता है, उस किसान का पेट कैसे भरेगा? अगर मेरी भारत सरकार कॉटन एक्सपोर्ट नहीं करने देती और मेरे किसान का कॉटन पैदा हुआ है, हजारों लाखों करोड़ों का नुकसान मेरे किसान को पड़ता है। तो क्यों न मैं किसान के इस कॉटन पे वैल्यू एडिशन करूं? क्यों न मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगा करके मेरे किसान का कॉटन उठा करके रेडीमेड गारमेंट बना करके दुनिया के बाजार में क्यों न बेचूं? क्या ये किसान की भलाई के लिए नहीं है? लेकिन पता नहीं क्यों एक ऐसा माहौल बना दिया गया है। ये विकृतियां, ये नकारात्मकता, गुजरात उससे काफी बाहर निकल चुका है। मित्रों, इस समिट का एक सबसे बड़ा संदेश यह है कि दुनिया के समृद्ध देश भी रिसेशन की चर्चा में डूबे हुए हैं। बाजार की मंदी का प्रभाव विश्व के समृद्ध देश अनुभव कर रहे हैं। विश्व पूरा इकोनॉमी लड़खड़ा रही है, चिंता में लगा हुआ है। मित्रों, ऐसे माहौल में, धुंधली सी अवस्था में, कंफ्यूजन की अवस्था में, उजाला कब होगा इसके इंतजार की अवस्था में, मैं दावे से कहता हूं मित्रों, ये समिट पूरे विश्व को आर्थिक जगत के अंदर एक पॉजिटिव मैसेज देने का सामर्थ्य रखती है। दुनिया के हर समृद्ध देश को गुजरात की यह घटना एक पॉजिटिव मैसेज देने की ताकत रखती है। मित्रों, अनेक विषयों में हमने सिद्धि पाई है। ये सिद्धि एक नई परिवर्तन की आशा लेकर के आई है। मित्रों, इस गुजरात को महान बनाना है, भव्य बनाना है, समृद्ध बनाना है, और स्वामी विवेकानंद जी का सपने पूरे हो, उस सपनों को पूरा करने के लिए गुजरात की जितनी जिम्मेवारी है उनको बखूबी निभाने का हमारा प्रयास है। मैं फिर एक बार इस समिट के लिए विश्व के जितने देशों ने सहयोग किया उनका मैं आभारी हूं। मैं विशेष रूप से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का आभारी हूं, जिन्होंने विशेष रूप से कल उनके एक एमपी को भेज करके एक चिट्ठी मेरे लिए भेजी और हमें शुभकामनाएं दी। मैं कनाडा के प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने गुजरात पे इतना विश्वास रखा है। दुनिया का समृद्ध देश भारत जैसे देश के एक छोटे से राज्य के प्रति इतना आदर के साथ जुड़ने का प्रयास करे, वो अपने आप में बेमिसाल है। मैं विश्व के सभी जो राजनेता यहां आए, राजदूत आए, विश्व के सभी देशों ने यहां हिस्सेदारी की, मैं उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और फिर एक बार आप सब आए, आपका बहुत बहुत आभार। और फिर एक बार 11 जनवरी 2015 आपको मैं फिर से निमंत्रण देता हूं। यू आर मोस्ट वेलकम 11th January 2015। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक्स अ लॉट। Thank you, Honorable Chief Minister, for that inspiring address.
धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका, आपके प्रेरणादायी प्रवचन के लिए। Ladies and gentlemen, with that we conclude this valedictory function. Thank you, namaskar. See you all in 2015. Thank you. Officers are requested to proceed to the Gold Dining Hall for a debriefing meeting. Thank you. All the officers are requested to proceed to the Gold Dining Hall for the debriefing meeting.